Before joining IHM Ahmedabad, what did you think the course would be like and how the difference in the reality? I was actually doing BSc in physics, NCHM जेई का पेपर देना होता है कोई भी IHM ज्वाइन करने से पहले. which I prepared from a book known as The Ultimate Guide for NCHMCT. So my father was like, "Do something that you look forward to do for the rest of your life." What was your first impression of IHM Ahmedabad when you stepped into the campus as a student? That it is one of the best college for hospitality. Funniest memory क्या है तुम्हारे hostel life में? Like हॉस्टल में हर कोई क्रेजी ही होता है, वो तुम्हें भी पता है कि नो लिटरली एग्जाम्स के टाइम पे कैसे प्रिपेयर करते हैं. एक रात पहले पढ़ के कैसे पास हो सकते हैं? कल सफिशिएंट डेट से आज बैठ के शुरू कर रहे हैं. आज पता चल रहा है हमको कि कौन सा असाइनमेंट है, क्या है, किसने दिया है. हॉस्टल में रहते रहते ऐसा क्या तुमको चेंजेस लगा, मतलब पर्सनली और प्रोफेशनली? हॉस्टल में रह के बहुत सारे चेंजेस आते हैं. तुमने आईटी कहाँ से की है और मतलब आईटी में तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या रहा? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ग्रैंड हायट मुंबई सांता क्रूज से किया है. हाय एंड वेलकम टू होटलियर्स माइक. ये पॉडकास्ट उन सब के लिए है जो होटल्स एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करना चाहते हैं. मैं हूं आपका होस्ट अंश भास्कर और यहाँ हम बात करेंगे रियल स्टोरीज, करियर अपॉर्चुनिटी, स्टूडेंट एक्सपीरियंस, इन सब के बारे में. सो एज अ गेस्ट हमारे साथ आए मिस्टर प्रफुल्ल वाघेला, जो कि अभी अभी इंडस्ट्री ट्रेनिंग करके आए हैं. उनसे आज हम बात करेंगे करियर अपॉर्चुनिटी उनका क्या है, उनका आगे का फ्यूचर में क्या प्लान है करने का, एंड उनको इस इंडस्ट्री से क्या एक्सपेक्टेशन है. सो हेलो मिस्टर प्रफुल्ल वाघेला, हाउ आर यू? हेलो अंश, आई एम फाइन. हाउ आर यू डूइंग? आई एम ऑल्सो फाइन. बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना पहले क्वेश्चन से, जो कि है बिफोर ज्वाइनिंग IHM अहमदाबाद व्हाट डिड यू थिंक द कोर्स वुड बी लाइक एंड हाउ द डिफरेंस इन द रियलिटी? So before joining the course and before joining my college at IHM Ahmedabad, I was actually doing another course, which Okay. is physics, BSc in physics, Oh. which I completed before joining the course. So it was a transition for me from physics to hospitality, and it was actually I was just about to do diploma in it, not the whole BSc degree, because I just had interest in culinary, because I just had exposure to culinary world Okay. and culinary academics too, because I have 2 3 friends of mine who are in hospitality, so I got knowledge from them. I got information from them. And after joining the course, I got exposure to every core department of the hospitality industry, like food and beverage service, housekeeping, front office, and various departments in the hospitality industries are run by this. So it was really a very good learning experience for me, getting exposure to the different departments other than my core department, which is culinary. So yeah. सो पहला जो इंटरेस्ट था हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, मतलब कैसे जगा, मतलब एक कौन सा इन्फ्लुएंस किया तुम्हें या किससे ऐसा क्यूरियोसिटी जगा कि हाँ मेरे को इस इंडस्ट्री में आना है? So my interest towards hospitality and mainly culinary grew up because of my grandmother. My grandmother used to cook, like she still cooks, but when I was young, like 10 or 12, so my grandmother used to cook some authentic Gujarati food, as I'm a Gujarati. So I used to go to her when she was cooking, and I used to see, observe what is she doing. So one day I was there in the kitchen and she was making chapatis, rotis, ओके. like rotla, Gujarati rotla. And I wondered that how is she able to make the chapatis round. So I started asking my grandmother, how you able to do this? कैसे बना लेते हो, मुझे भी करना है ऐसे ऐसे. तो फर्स्ट शी रेजिस्टेड इट कि नहीं, ये सब करके कुछ नहीं मिलेगा, पढ़ाई करो ये वो. होता ही है हर किसी को, हर किसी के पेरेंट्स में. तो स्टिल आई वाज कीन टुवर्ड लर्निंग इट एंड डूइंग इट. सो 2 3 दिन परेशान करके फाइनली दादी ने मुझे करने दिया वो रोटी बनाने. सिर्फ बेलने और सिर्फ अच्छा. बेलने. हाँ. तो पहली बारी में तो पता नहीं किस देश का नक्शा बना दिया था मैंने. बात ऑब्वियसली तो सही सबके है. साथ यही होता सबके है. साथ यही होता है, पहली पहली हाँ, बार में कहाँ बनता है अच्छे से. हाँ. तो
That from making chapatis, I grew interest in other dishes too, like dal dhokli. She used to cook Gujarati food, dal dhokli, Hmm. khichdi, sev tomato ki sabzi, and all. So I started observing her from that point. So I guess means for sure my interest grew from there towards the culinary world, and then there are a lot of things that can influence you, like books, internet nowadays, YouTube. So from there too, I got to learn and got interested in towards culinary. ओके, मतलब वही है कि Yes. इस इन culinary में इंटरेस्ट सबसे पहले घर से ही आता है। वो पहली रोटी जब तुम Yes. बनाते हो, Mostly dadi. मोस्टली दादी हो गई या माँ हो गई, यही इन सबको देख के Wow. सबसे ज़्यादा ही वो इस इंडस्ट्री में पहले होता है कि नहीं, मैं अब आगे चल के शेफ़ बनूँगा। क्योंकि अब यही होता है कि यहीं से एक चीज़ पता चलती है कि हाँ, मुझे आगे करना क्या है। पहला एक छोटा-सा हमें आगे का फ्यूचर पता चलता है कि मुझे क्या करना है। सो दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि तुमने बताया था कि तुम बीएससी इन फिजिक्स कर रहे थे, और शायद तुमने ये भी Yes. बताया था कि तुम्हें मास्टर्स भी करना था साथ-साथ। मतलब इसके हाँ. बाद तुम्हारे बीएससी फिजिक्स के बाद की मतलब 3 साल के बाद जो तुम्हें करना था। तो उस टाइम हाँ. तुम्हें एनसीएचएम जेई का पेपर देना होता है, कोई भी आईएचएम अहमदाबाद, कोई भी आईएचएम ज्वाइन करने से पहले। तो तुम्हारा उस टाइम पे Yes. क्या, मतलब तुमने प्रिपरेशन क्या किया, और तुम्हारा व्हाट वाज योर माइंडसेट ड्यूरिंग दैट टाइम, कि तुमने क्या किया उस टाइम पे कि नहीं, मेरे को इसको छोड़ के अब हॉस्पिटैलिटी पे चलते हैं। Yes. So as I said, my interest grew in hospitality and mainly culinary due to my grandmother. हम्म, And it was when I was 10, 12 years old, or that age. तो वो तो दादी से मुझे इंटरेस्ट ग्रो हुआ वहाँ पे, लेकिन मेरा खुद का इंटरेस्ट जब था, लाइक वो एज का था, तब हर बच्चे का होता है, लाइक जैसे कि स्पेस है, फिर नासा है, रॉकेट्स है, हम्म, स्टार्स है, आउटर स्पेस, वो इंटरेस्ट था मेरा कि आई वांट टू बिकम एन एस्ट्रोनॉमर व्हेन आई ग्रो अप and pursue that. So I started developing my base towards it. So that's why I got into BSc Physics. But while I was doing my BSc Physics, like b- while that time, उसी समय मेरा culinary के लिए इंटरेस्ट भी ग्रो कर रहा था साथ साथ में. So when I completed my physics degree, my interest towards culinary was ओके, heavy, like ओके, heavier than the astronomy thing. So I decided to give entrance exam for MSc Physics ओके, and MSc Astrology and this JEE NCHM एनसीएचएम जेई। JEE for Hospitality Studies. So starting में तो ऐसे था तब से कि क्या हो रहा है, क्यों, because it's a shift from one field to वन another. फील्ड टू It's a अनदर, हाँ। completely different field. ओके, तो स्टार्टिंग में तो घर से, फ्रेंड्स से, खुद भी ये सोच रहा था कि क्या, मतलब शिफ्ट होगा तो क्या होगा, कैसे करूंगा, शुड आई स्टिल कंटिन्यू विद माय एमएससी जर्नी, और शुड आई get into hospitality and start studying hospitality and get the career into it. बट बहुत सारे, मतलब पापा के साथ बात करके, फिर फ्रेंड्स के साथ बात करके, फिर खुद खुद भी सोच के ऐसे फील हुआ कि नो, आई शुड गो इनटू culinary. So I gave the NCHM exam, ओके, which I prepared, which I prepared from a book known as the Ultimate Guide for NCHM JEE, which I got from Amazon after some research. And it is a good book because it covers every aspect of the exam यस, in one single book, and gives a good knowledge about the exams and the type of questions, and it prepares you well for the exam. So basically, I wanted to pursue culinary. So my first goal was to do diploma. Diploma is also available. So I wanted to do diploma. So I went to IHM Mumbai. It's just close by my house for some inquiries about the course. What other courses are available. So I got to know about BSc Hospitality, BSc in Hotel Administration from IHM Mumbai about the course. So I discussed it with my father. So my father was like,
what is the difference between diploma in culinary and what BSc hospitality studies. So I explained it to him that BSc hospitality is the overall study of the hotel industry, food industry, service Yes. industry, Yes. housekeeping industry, front office, etc., etc. And in diploma, you just study about the culinary department of the hospitality industry. So my father was like, go for the BSc one, don't do the diploma as you'll just be limited towards the culinary field. But in BSc, you'll get a wide exposure towards the hospitality industry, the whole hospitality industry, and aspects of more aspects of the industry. So my father motivated me to get into the BSc degree rather than the diploma. ओके। इट मीन्स कि तुम्हारे जो पापा है मतलब वो काफ़ी ज़्यादा ही सपोर्टिव थे। इट मीन्स कि अगर देखा जाए Yes. तुम्हारे पापा के अलावा बाकियों का क्या रिएक्शन था, मतलब फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था जब तुमने कि वही है कि तुम फिजिक्स के दूसरे फील्ड में जा रहे हो, तो उनका कैसा रिएक्शन था कि उनका क्या होना था, मतलब सरप्राइज हो गए कि ज़्यादा सपोर्टिव निकले कि हाँ नहीं करेगा तू, कर ले। So I got both feedback from my friends and family, negative and positive. My family was more supportive of me ओके। for getting into the course, getting the shift of the courses. My father was really supportive, as I told you. My grandmother, my uncle was supportive. My uncle was like, if you are shifting from one field to another, just focus on it and go get into it. And my father advised me one thing that if you're doing something, if you're shifting from one course to another, do something that you love and do something that you look forward to do for the rest of your life. This was the advice from my father that कर रहा है तो कर, लेकिन जो पसंद है वो कर और पूरी जिंदगी कर, मतलब खुद को देख सके वो करते हुए वो कर ऐसे. So yes, I got a positive feedback from my father. My friends too gave me uh, both feedback, positive and negative. Some friends were like, "Go for it. Always wanted to do cooking, culinary, so you'll do what you love." And some were like, "You shift kar raha hai, just continue in physics. You'll do better. You already completed the degree. You have to shift. तो फिर से डिग्री करना पड़ेगा, फिर से तू पीछे चला जाएगा, वेटागिरी करेगा, ये वो ऐसे बहुत बहुत लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फीडबैक दोनों मिले. रहते हैं, बट हाँ। आई जस्ट फोकस्ड ऑन माय I just focused on the positive ones and got into it. Some friends were positive too. Like one of my friends, Saurabh, he just gave me a kick. Like get into it, do what you love, and you'll be happy. So this is the feedback I got from my family and ओके। friends. दैट्स ग्रेट। मतलब वही है कि अगर तुम्हें एक्सटर्नल सपोर्ट मिलता है किसी से तो तुम्हें और बूस्ट मिल जाता है वो चीज़ करने के लिए। अगर यही है कि मतलब कोई सपोर्टिव भी होना चाहिए साथ साथ तुम्हारे लाइफ में कि अगर तुम्हें कुछ करना है तो। व्हाट वाज योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ IHM अहमदाबाद व्हेन यू स्टेप्ड इनटू द कैंपस एज अ स्टूडेंट? Uh, so I got to know about IHM Ahmedabad from YouTube, Google, and blogs from internet that it is one of the best college for hospitality. So when I got there on the admission day, when I got there on the admission day for the admissions, my first impression was I was just mesmerized by the campus, by the students welcoming us, showing us the hospitality that they learn. My father was really happy that I'm getting into the college. मतलब पापा तो बहुत खुश थे कि ये कॉलेज में पढ़ने वाला हूँ. हाँ। Because it is one of the best, as I've told my father that this is the third ranked college all around the India for hospitality and NCHM. So कॉलेज का तो बहुत पॉजिटिव था फीडबैक. मतलब कॉलेज का नहीं, मेरा फीडबैक कॉलेज की तरफ बहुत पॉजिटिव था because it has a huge campus and the classes like the kitchens where we study culinary और FO के लैब्स बढ़िया है, HK के लैब्स बढ़िया है, क्लासरूम बढ़िया है, स्टूडेंट का बिहेवियर वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, लाइक वाज द दैट इज द मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। impactful thing for me. That my father also told me that see you are going to do this in the future too. How well groomed, how well behaved, how well mannered are they?
हम्म। That वो भी था. Like I was happy that my father was happy that I'm getting into the college ओके। and learning what I love. अब जैसे कि तुमने आईटी कहाँ से की है, और मतलब आईटी में तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या रहा? मतलब जब तुम्हारा एक्सपीरियंस है कलिनरी में, तुम वही हो, Yes, तुम कभी गए नहीं हो मतलब मोस्टली प्रोफेशनल किचन में। अ, एक जब तुम घर पे बनाते थे और जब तुम इसमें आए तो yes, तुम्हें क्या डिफरेंस लगा कि मतलब कितना, मतलब है बहुत डिफरेंस है, आई थिंक जमीन आसमान का फर्क है घर में काम करने से और होटल में बहुत उतने ज़्यादा लोगों बड़ी. का काम करने से। तो क्या तुम्हें मिला? Yes. तो मैंने अपना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ग्रैंड हायट मुंबई सांता क्रूज से किया है. और मैंने ट्रेनिंग के दौरान 4 कोर डिपार्टमेंट और एक एंसिलरी डिपार्टमेंट में काम किया है, और वहाँ से मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिला ऑफ द प्रोफेशनल वर्ल्ड, हम्म। व्हाट इट इज एक्चुअली. सो कलनरी में बेसिक्स पता थे लेकिन कभी काम नहीं किया था इन अ प्रोफेशनल किचन. तो वहाँ बहुत कुछ सीखने मिला सीनियर से, शेफ से. फिर F&B, हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस, इन तीनों का तो लिटरल पहला पहला वो था, पहला एक्सपोजर था वो मेरे लिए. और HR डिपार्टमेंट का भी, जो एंसिलरी डिपार्टमेंट मैंने दिया, वो लिटरली पहला एक्सपोजर था मेरे लिए. उससे बहुत कुछ सीखने मिला. लाइक F&B में बेसिक्स, लाइक बेसिक्स पे इतना ध्यान देते हैं कि हाँ, यू हैव टू डू दिस वे, यू हैव टू डू इट लाइक दिस. बिकॉज होटल में ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर टू मेंटेन द लेवल ऑफ स्टैंडर्ड्स, हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड्स हाइजीन। ऑफ सर्व. हाइजीन टू, हाइजीन सीखने मिला कि हाँ, होटल में क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, कैसे करना पड़ता है. बहुत कुछ सीखने मिला होटल में. लाइक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इज द point of your course where you get to get an exposure to the professional world, hospitality professional world. And वहाँ पे आपको पता चलता है कि yes, you are into it or not. मतलब बहुत लोग छोड़ भी देते हैं, लेकिन हाँ, if you are willing to put on the hard work and you are really want to pursue a career into hospitality industry, you'll get to learn a lot of things, and industrial training is very important for it. ओके। Going to industrial training is very important for it. अगर आपको करियर बनाना है तो आपको होटल में एज अ, मतलब वही है, एज अ इंटर्न बन के आपको काफ़ी चीज़ जानकारी मिलता है, काफ़ी चीज़ सीखने मिलता है, मैनेजर से, बहुत सीखने को जीएम मिलता है, से, बहुत. मतलब। मैनेजर्स है, सीनियर्स है, सुपरवाइजर्स है, हम्म। सब. लाइक लिटरली किचन में, किचन का हाइजीन प्रोसीजर, फूड इन आउट प्रोसीजर, फूड का मेकिंग, फूड का स्टोरेज. फिर F&B में हो गया सर्विस प्रोसीजर्स, सिटिंग अरेंजमेंट इन बैंक्वेट्स. फिर फूड इन आउट, फूड लाइक हम्म। फूड मैनेज कैसे करते हैं बुफे में, हम्म। रेस्टोरेंट में फूड मैनेज कैसे करते हैं, सर्विस हो गया टू अ गेस्ट इन बुफे एंड इन अला कार्ट. और फिर हाउसकीपिंग में स्टैंडर्ड ऑपरेशन ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो गया. और क्लीनिंग, हाउ रूम इज क्लीन एंड मेंटेन एंड मेड फॉर द guest after checkout and for a newcomer, like for check-in, for the ओके। new guest. फिर front office में how to welcome a guest, how to escort a guest, how to handle a guest request, how to fulfill a guest request, how to handle the luggage, how to escort a guest to any point of hotel he wants to be. बहुत कुछ सीखने मिलता है HR में. लाइक मैंने HR में काम किया. बहुत वो मिलता नहीं है लेकिन मुझे मिल गया by luck. So I learned a lot of things like interview procedures, how to how HR managers handle employee complaints, employee requests, holidays, payrolls. Then new joiners, how they approach like how they approach uh, potential employee to the company. That too I got to learn. So yes, I got a good exposure from Grand Hyatt Mumbai, and I'm very grateful for it. तो ऐसा कोई Yes. ड्रीम होटल या क्रूज लाइन या ऐसा कोई ब्रांड जिसके साथ तुम्हें काम करना है इन फ्यूचर? So after I've done my IT from Grand Hyatt Mumbai. So for me, it's been a excellent experience to get an exposure from this kind of, like this big brand
in the hospitality industry, which is Hyatt. So I look forward to get into Hyatt brand. Hyatt is one of the brands that I look forward to work in. Hyatt हो गया फिर Taj is one of it. Taj है और final goal is to develop a restaurant or QSR business, food business basically. I want to do it. So I'll first get an experience from the hotel industry about the culinary because from hotels you can get a lot of experience of every aspect of the hospitality industry, which is very important if you want to do a business in the future or if you want to pursue a higher level post in the same industry. So yes, I want to get into cruise too. So I'll first get into the hotels and gain some experience. Then I'll go to cruise. As cruise में दो फायदे हैं. एक तो दुनिया घूमने को मिलता है. तो दुनिया घूमने मिलता है। दूसरा यू तीसरा दूसरा यू दूसरा ये है कि हाँ पैसे भी अच्छे मिलते हैं. And that too in foreign currency. So you can get a good base for your future. Like if you want to do business, you can get a good base from it. So yes, hotel, फिर cruise, फिर eventually, hopefully, let's see what happens if I get into food business or not. So final goal to food business here तो वही है कि to develop my own brand. बिजनेस खोलने से पहले ये सब का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, तभी आप मार्केट में भी टिक पाओगे, या तभी आपको जानना पड़ेगा कि मार्केट कैसा Yes, चल रहा है। yes. You have to understand the market before getting into it. So getting the experience into the concerned market is very important. इट्स You can get वेरी only इंपॉर्टेंट, यस। you can get the experience only by working into the industry. So yes, I'll work in the industry for a while. Not for a while, but yes. ओके। अब फाइनली व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू समवन who still unsure about the choosing in hospitality as a career? Uh, my advice for someone who's unsure to get into hospitality would be you should give it a try because in India हॉस्पिटैलिटी को बहुत अलग तरीके से देखते हैं. लाइक सिर्फ ऐसे बोल लाइक इफ यू से इफ आप किसी को बोलते हो कि हाँ होटल मैनेजमेंट करने जा रहे हो तो वो सिर्फ किचन की तरफ या culinary की तरफ देखते हैं. लेकिन हॉस्पिटैलिटी इज अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ Yeah, it's all right. इंडस्ट्रीज. बहुत बड़ा है हॉस्पिटैलिटी. जितना हम सोचते हैं उससे बहुत ज्यादा उसमें पोटेंशियल है टू गेट इनटू. So if you're unsure about getting into hospitality, I advise you to get into it and explore explore what you really want to do. जैसे कि मैं खुद culinary के इंटरेस्ट से ज्वाइन हुआ था लेकिन उसके बाद मुझे F&B में इंटरेस्ट डेवलप हुआ. फूड बिजनेस में इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि हाँ फूड बिजनेस कर सकते हैं F&B कर सकते हैं. So you'll get to learn but you have to have that learning attitude into yourself to get into hospitality. जैसे मैंने एक फील्ड से दूसरे फील्ड में शिफ्ट किया है, ट्रांजिशन किया है, लेकिन मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है बिकॉज आई हैड अ लर्निंग एटीट्यूड टुवर्ड्स इट. सो यस, if you're not sure, you should definitely get into it and learn and see how wide spectrum hospitality could be. Because hospitality is literally everywhere, every sector. वही And है कि अगर आपको कोई करियर चूज करना है तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी काफ़ी अच्छा है एज अ करियर अगर आप चुनते हो। तो ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ इसी इंडस्ट्री में रहना है, आप इसके बदौलत आप कहीं पर भी जा सकते हो। इट मीन्स आप रिटेल्स में भी जा yes, सकते हो, आपको अगर एज अ एचआर yes, काम करना है आप बहुत जगह जा सकते हो। ये नहीं है कि सिर्फ आप होटल्स में ही वो काम कर रह जाओगे। उसके स्ट्रीम्स बहुत ज्यादा है. बहुत ज़्यादा स्ट्रीम्स है इस उसके। कोर्स के स्ट्रीम्स बहुत ज्यादा है बट you can get into like as you said you can get into retail, non-food retail, food retail, हम्म। management. You can get into HR. You can get into banks. As one of my father's colleague he's a hospitality student. He used to work in Qatar Airways, Qatar Lounge, and now he's an assistant manager in bank. My father worked. Something better will come up. Something better will come up if you try यस, hospitality यस। as a career path. This is my personal experience.
I the way I was and the way I am right now is a very different person. Like हर तरीके से शेप होते हैं हॉस्पिटैलिटी में आने के बाद, पर्सनली प्रोफेशनली मैनर्स, फिर हाउ द वे यू कैरी योर सेल्फ, लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, बहुत कुछ सीखने मिलता है. दैट इज वेरी एसेंशियल फॉर you to get into any industry. Confidence. So Hmm. yes, give it a try. Yes. Let's bring this episode of Hotelier's Mag to an end. Thank you for giving me a valuable time, Praful, sharing your professional life, sharing your journey, sharing your experience about this. Thank you so much for inviting me to the podcast. It was a great talking to you. It was a great experience talking to you. So, all the best for your future, Praful. Thank you, Ansh. Thank you. Bye bye. Bye bye.